Hello students, once again your heartily welcomes in my YouTube channels. Students, इस वीडियो के माध्यम से आपका हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फाइबर टू द फैब्रिक। वैसे तो ये चैप्टर 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस में पढ़ना है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों क्लासेस के लिए उन सारे कॉन्सेप्ट का शॉर्ट में एक वेल एलिमिनेशन के साथ उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको स्टडीज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट योर चैप्टर। वी ऑल ऑफ द नो दैट द क्लॉथ आर एज इम्पोर्टेंट एज फूड एंड द शेल्टर फॉर द ह्यूमन बींग्स। We wear cloth for a protection against the different type of the weather conditions such as the rain, snow, extreme heat or a cold. Cloths also protect us from the insect bites. Cloth reflect our personalities and make us look good. People all over the world wear the different kinds of the clothings. It usually depends on the weather conditions of that particular places. In the additions, every region has its own the traditional cloth. There are peoples in the different occupations who wear the special uniform at the work like the armies, policemen, postman, doctor, teachers, nurse. It all have the different kinds of the uniform. स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे लिए फूड और शेल्टर आवश्यक है, वैसे ही हमारे लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, वह है हमारा क्लॉथ्स। क्योंकि क्लॉथ्स हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वेदर कंडीशन जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश, ठंडी, गर्मी और सन से आने वाले उस अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। क्लॉथ्स हमें कभी कभी इंसेक्ट बाइट या कुछ ऐसे भी इंसेक्ट से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जो हमारी बॉडीज के लिए हार्मफुल्स हो। क्लॉथ्स हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। हम अच्छा खासा कपड़ा पहन के हम जेंटलमैन बन सकते हैं। क्लॉथ्स हमारी पर्सनालिटीज को ऑल्सो इंक्रीज करके उस लेवल पे पहुंचा देता है जिसमें हम एक स्मार्ट लुक में आ जाते हैं। हमारी पर्सनालिटीज, हमारे पैसे को भी क्लॉथ शो करता है। जैसे कि आर्मीज को एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस कोड मिलता है जिससे उनकी स्पेशल सी पहचान बनती है। वैसे ही पुलिसमैन्स, डॉक्टर, नर्स, लीडर, इन सब की एक अपनी ड्रेस कोड होती है जो उनकी पर्सनालिटीज एंड द ऑक्यूपेशंस को रिप्रेजेंट करता है और उन्हें एक गुड लुकिंग बनाता है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगर हम बात करें द हिस्ट्री ऑफ द क्लॉथिंग मटेरियल्स, सो हम कह सकते हैं कि प्रिवेटिव मैन्स एंड द वुमेन्स हैड नो आइडिया अबाउट द क्लॉथ्स एंड वेयर एट द मर्सी ऑफ द वेदर. During the Stone Age, humans started covering their body with the big leaves or a bark of the tree and the animal skins or a fur to keep themselves warm. स्टूडेंट, जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करें ऑफ द क्लॉथिंग मटेरियल की, तो इसके बारे में आज तक कोई सटीक जानकारी नहीं है कि इस क्लॉथ का इन्वेंशन किसने सबसे पहले किया और सबसे पहले इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ और कब हुआ। लेकिन हमें पता है कि आज से कई हजार साल पहले जो ह्यूमन रहते थे वह जंगलों में रहते थे और वह अपने आप को फुल्ली ऑन द नेचुरल थिंग्स पे डिपेंड करके थे। उनके पास यह आइडिया नहीं थी कि वह कपड़ा बनाए या कपड़ा पहने। वह अपने आप को अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, जब अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती थी तो बड़े बड़े पेड़ों के छात पर लिप पत्तियों से, उन पेड़ों के छालों से और जंगली जानवरों के स्किन से अपने बॉडीज को गर्म रखते थे। लेटर ऑन, when the human beings turned into the agriculturist, they launched to the weaves, twigs and grasses in the fabric. Early human beings used the cotton as well as the flax for making fabrics.
they used to wear unstitched clothes because the stitching was not known. Students, with the inventions of the swing needle, people started stitching to make the different type of the clothes. Stitched cloths began to be used in India around the 14th century. Even today, unstitched fabric in the form of the sari, dhoti, lungi, or a turban are used. Western clothing gained popularity in the India during the 20th century. Thus, we find a large variety of the fabric and the clothing materials in the market. Students, after we know about the history of the clothing material, we go to study about the fibers. A fiber is the thread which is the strong and the flexible enough to the make cloths. It is a hair-like strand from which all the fabric are made. Fiber are spun into the threads and later they are woven into the cloth with the help of the loom or a weaving machine. We get fibers from the different sources. The fibers that we get from the plant and animals are called natural fiber. Again, I will repeat it. The fiber that we get from the plant and the animals are called natural fiber. For example, cotton, jute, wool and the silk are all natural fiber. Some fiber are made by the people and the factories. Such fiber are called artificial fiber or a synthetic fiber. Again, I will repeat it. Some fibers are also made in the factories by the help of the people. It's known as the synthetic fiber, yeah, artificial fibers. For example, rayon, nylon, polyester or acrylic are synthetic fiber. Let's go students to the thought one by one about the different kinds of the fibers. So we firstly discuss about the plants fiber. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि फाइबर को दो भागों में उनके ऑब्टेंट के आधार पे बांटा जाता है. पहला प्लांट फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो प्लांट से पाए जाते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके उन सारे प्लांट्स फाइबर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. So we firstly taught about the cotton plants. Students, we know that the cotton is the most extensively used plant fiber. It is a soft, white colored fiber. India is the world's largest producers of the cotton after the China. It means India is the second largest producer of the cotton in the whole world. In India, the main cotton producing states are Punjab, Haryana, Gujarat and the Rajasthan. The cotton plants mainly grown well in a black and alluvial soils. It needs the plenty of the sunshine and the preferable mild, cold and the dry climates. It needs a fair amounts of the irrigation during various stage of the growth. It is the grown in India between the May and September. The harvesting begins from October in India of the cotton plants. Student, when you saw the plants of the cotton, then you observe a cotton is the soft bushy plants. It is about 5 to 6 feet height with broad 3-lobed green leaves. Cotton plants bear a large number of the small green fruits called cotton balls. Again, I will repeat.
cotton plants bear a large number of the small green fruits that's called the cotton ball. The ball of the cotton contains seed covered with the white fibers. When the cotton ball matured, they burst open, the exposing the white fiber of the cotton. Cotton is usually hand picking from the plants. The picking process lasts for about a month as the ball don't mature at the same time. After that, we use the different process of the making the cotton fabric from the cotton fiber. We will going to the discuss one by one every step in the details. Students, the first process of the making the cotton fabric from the cotton fiber is ginning. Ginning is the process of the removing cotton seed from the cotton fiber. It is done by the passing harvested cotton through the rolling gins. Ginning was the traditionally done by the combing manually. The fibrous materials left after the separating the cotton seed is called lint. The lint is then tied and the pressed into the bells. Each bells of the cotton generally weight 200 kg. Students, the second process of the making cotton fabric from the cotton fiber is spinning. The process of making yarn from the fiber is called spinning. The lint is directly spun into the yarn on the spinning wheels charkha, that is the traditionally done in India, or the hand spindle called the takli. Spinning is done on the large scale with the help of the spinning machines in factories. Then the third process of the making cotton fabric from the cotton fiber is making the fabrics. Weaving and the kinting are the two most important processes which are used for the making fabric from the yarn. The process of the alternating overlapping of the sheet of yarns together to make the fabric is called the weaving. It is done by the weaver on a machine called the loom. The looms are the either hand operated, that's known as the hand loom, or power operated is known as the power looms. Fabric is also made by the process of the kinting. The kinting is the single yarn used to make the pieces of the fabric. It is done by the hand and also on machines. Thus, weaving and the kintings are used to make the different kinds of the fabric, which are then used for a variety of the clothing item. The whole process of the making the fabric from the cotton fiber is seen on the screens via diagrams. Students, after that we talk some usage of the cottons. Cotton is the used to the manufacture the cotton textiles. Cotton is also used as the filler in a pillows, quilts and the mattress. It is used for making surgical bandage. Cotton is used for making the dhotis, saris, bedsheet and the table cloth materials. Cotton is also used in the manufacturing the paper in the paper mill. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आज के क्लासेस में क्लॉज और उससे जुड़े बहुत सारे चीज़ों को डिटेल्स में स्टडी किए. हमने पहले प्लांट्स ऑब्टेनिंग फाइबर्स कॉटन्स के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया. हम नेक्स्ट वीडियोज में और अदर प्लांट्स प्रोडक्टिंग फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.